29th of August, 9:26 a.m. I'm in South Bombay. This is the Jaguar showroom. I'm traveling in a BEST bus, which, needless to say, air conditioned. The AC doesn't work, but it's the absolute grit and the will of the conductor and the driver who have ridden this bus despite restarting it many times over, all the way from North Bombay to South Bombay. Commendable. अगर भारत के पार्लियामेंटेरियंस और एमपीज इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर की तरह हो तो ये देश का कहीं जल्दी सुधार हो सकता है, क्योंकि ये लोग गिव अप नहीं कर रहे। पर हमारे पार्लियामेंट में जितने लोग डिबेट करते रहते हैं, और जिस तरह से मैंने ये अन्ना हज़ारे का डिबेट देखा कुछ दिन पहले, आई थिंक the MPs need to come and take a lesson in determination and grit from the driver and the conductor of this bus. Completely commendable. कंडक्टर साहब सीढ़ियों के सामने पूरे रास्ता खड़े रहे और लोगों को इन्फॉर्म करते रहे कि दरवाज़ा खुला है, एसी नहीं चल रहा है, बस को धक्का मारना पड़ रहा है, इसलिए नए पैसेंजर्स को अंदर नहीं लिया. That's called standing on your feet and taking control of the situation. लेकिन चलिए, अब मैंने तो अपना मैसेज दे दिया. भारत के जितने एमपीज़ हैं, इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर से आके एक शिक्षा लीजिए, एक लेसन लीजिए कि जब गड़बड़ होती है तो किस तरह से. द बस स्टॉप नाउ अगेन, बट ही इज़ ट्राइंग, ही विल ट्राई अगेन. वो फिर कोशिश करेंगे, फिर चलाएंगे, ताकि जितने कस्टमर्स बस में बैठे हैं वो इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि खासकर बाहर इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. एंड टू रीच दिस प्लेस is completely awesome. The bus is stopping for the 5th or the 6th time on the way, and a co-passenger in this bus tells me that this is a Chinese-made bus, something the kind that they're wanting to get rid of, because out of the 3 kinds of buses in BEST which are air conditioned, this is the worst kind. I hope this video reaches the CEO of or the chairman of BEST and gives you feedback from a customer who was traveling in your bus for the first time. Met wonderful people. साहब, आपका नाम क्या है? आपका नाम? नहीं, नाम से नहीं जानते हो, नाम से नहीं जानते हो. ओके, ठीक है, ठीक. So absolute compliments to the conductor and the driver, जिन्होंने पिछले 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पता नहीं कैसे धक्का चला के ये गाड़ी को यहाँ तक ले आए हैं. और फिर देखिए, गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई है. ये जादू है जिसको कहते हैं भारत. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Wow, monsoon Mumbai. This is amazing weather, and I'm gonna try and get you the number of this bus so that the CEO of BEST can watch this. It's MH01LA6794, and these Chinese buses need to go back to their manufacturer, and some bank guarantees need to be invoked. And yeah, we need to get our act together. Are we gonna let China continue to dump its non-efficient technology on India? Question mark. Ladies and gentlemen, get up. Become your Anna Hazares of sorts. You know, every single day when you're on the streets, you see so many things which are not right. I mean, tell me, no buses are driving on this pavement, but these paver blocks are all uprooted. Is this, I mean, I want to know who's the chief engineer of this area. I want to know what is the municipal corporator's name. I want to know the name of this MLA. I want to know the name of this MP. I want to write them emails. And if they don't work, I want to go outside their house and I want to scream, saying, I tripped on this pavement. This is what corruption in India is. This is what Anna Hazare and team have to see and watch. Because sitting outside in Ram Leela Maidan is just a start. Thank you.